All right, so in continuation to the previous session, we were discussing these examples of work done. So let's move onwards. Okay, there's another question. Quickly, we are going to just see it's pretty similar to the one which we just discussed previously. There's a block which is pulled along a rough horizontal surface by a rope pointing at 60 degree above the horizontal, and the tension in the rope is 10 Newton and the frictional force is 5 Newton. The block moves a distance of 2 meter along the surface. So a distance moved or covered is 2 meter. Question says calculate the work done on the box by number 8 tension in the rope. So let's the tension in the rope is how much? The amount of tension is 10 Newton and it is acting at an angle of 60 degree. So what is the formula of finding it out? So it is already being solved here. We know work done is equals to Fs cos of theta, tension force is 10, and angle is 60 degree. So this will become cos of 60, and let's say the distance covered is 2. So 2 will be multiplied with whole of this value. So when this whole value is multiplied with 2, your work done will be equals to how much value? Work done will be equals to 10 joule. And what about the frictional force? So let's say our frictional force in the backward direction is 5 newtons. There is a frictional force acting on the body and it is covering a distance of how much? 2 meters. So for instance, if a body if we have to find out the work done due to this frictional force, so we know distance covered is forward and friction is backward. So what angle will be formed between both of them? It will be 180 degree. So again, for finding out the work done in the case of friction, it is W is equal to Fs cos of theta. So we can say that work done will be equals to what is F? F is the force. Force is how much? 5. So let's say 5 is the force. The distance covered is how much? 2. An angle between them is how much? It is cos of 180 degree. So if we just solve it all, it will be equals to negative of 10 joules. So when force is in opposite direction to the distance we studied previously, work done will be negative. And when force is lesser than 90 degree, in direction to the distance, it will always be a positive. Is this fine? Yes, sir. Okay. Shall I move onwards? Yes, sir. Okay, Ji. Next topic, it is again related to the work done, but graphically. So, for example, if a graph is given to us between force and distance. So, let's say on y-axis we are having a force and on x-axis there is a displacement and we are having a constant force F. So, whenever there is a constant force F and it is covering, body is covering a distance d. So, area under force displacement graph will be telling us about work done. It will be telling us about work done. So you must write down that area under Fs graph is equals to work done. Likewise, if there is a force which is increasing constantly or linearly, if there is a straight line graph between force and displacement, again the area under force displacement graph will also be representing the work done. And if, for example, force is varying, or let's say force is now present on x-axis and displacement is on y-axis, now the area between the graph and the displacement axis. So you can see displacement is on y-axis and you can witness the graph is increased this way. Now this whole area will be representing the work done. So from a graph, how we can find out the work done? The work done can be found simply by area under force and extension graph. Or you can also state that area between the graph and the displacement axis will also be equivalent to work done. So area under force extension graph is equals to work done. Is this fine? Area under force extension graph is equals to work done. Yes, sir.
You must write down with you. You must draw these graphs with you. You should be having these pointers with you. Shall I move onwards? Just a minute, जी सर. Sharik. Sure, I'm waiting. You can take your time. You can move on, sir. Okay. Okay, this is an exam question being shown in front of you. And let's see what is being asked in this specific question. The question says the diagram shows a barrel of weight 2.5 into 10 power 3 Newton as a frictionless slope which is being inclined at an angle of 40 degree. So there is a frictionless slope. The diagram shows a barrel of weight 2.5 into 10 power 3 Newton. So this is the weight of this barrel and it is present on a frictionless slope which is inclined at 40 degree. Question says a force is applied to the barrel to move it up on the slope at a constant speed. So it is moving at a constant speed in an upward direction. The force applied is parallel to the slope. So there is going to be one force which is parallel to the slope. Question says how much work is done in moving the barrel a distance of 6 meter up the slope. तो इसने पूरा हॉरिजॉन्टली यानी कि द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लोप जहां से भी उसने मूव किया जितनी भी उसको फोर्स लगी वो सारा डिस्टेंस कितना था दैट डिस्टेंस वाज 6 meters और फोर्स जो है वो पैरेलल लग रही है इसी स्लोप के ठीक है द फोर्स इज पैरेलल टू दिस inclined surface. Now question is asking कि हमने work done find करना है. So yes, can anyone give me a clue how we are going to find out the work done in this specific case? Yes, can anyone give a clue क्या करना चाहिए हमें इसमें वर्क डन फाइंड करने के लिए? सर जो नीचे वाला फोर्स लग रहा है 2.5 मिड पे 10 पावर 3 के न्यूटन, इसको आप दो डायरेक्शन में करते हैं. एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के ऑपोजिट और एक फोर्स के ऑपोजिट होगा. दो बिल्कुल एंगल्स ठीक है. में बनेंगे. तो विच इज एक साइन थीटा हो जाएगा, एक कॉस थीटा हो जाएगा. वेरी गुड. तो हम इसको करेंगे कैसे? वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. वी आर गोइंग टू ब्रेक इट इनटू इट्स कंपोनेंट्स. तो वो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? एक कंपोनेंट बन जाएगा वर्टिकल विच विल बी जस्ट इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स और एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल. ठीक है. तो हम ब्रेक करेंगे इस वेट को इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड आई हैव टॉट यू प्रीवियसली कि हाउ डू वी ब्रेक द फोर्स ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस. ठीक है. So let's say there is an object which is lying here and angle is 40 degree and if its weight is acting downward, let's say this is the weight which is W. So we are going to convert it into two two components. This is the horizontal component and you know if this angle is 40 degree, so what this inner angle will be, this inner angle will also be 40 degree. और ये W है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया, ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया. तो अगर हम इसको सॉल्व ये सॉरी ये बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर बन गया. तो अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें, आई हैव टॉट यू originally that this side will be equivalent to W cos of 40 degree and this side will be equals to W sine of 40 degree. Is it so? तो हमारे पास जो ये force which will be parallel to this whole surface, this whole force will be equals to what value? It will be equals to W sine of 40 degree. तो हमारे पास force कितनी आ जाएगी इसको solve करने के लिए? The force over here will be equals to what is the weight? Weight will be तो हम इसको लिखते हैं W sine of 40 and that W sine of 40 W is equals to how much value? 2.5 into 10 raised to power 3 multiply by sine of 40 degree. So we will be solving this whole notation for the force. So anyone having the calculator with them can solve this whole relation and tell me what this 2.5 into 10 power 3 into sine 40 will be equals to. And next we also know that the distance covered is how much? The distance covered is 6 meters.
So to find out the work done, what are we going to do? ये जो पूरा expression है 2.5 into 10 power 3 sine of 40 degree will be multiplied with 6. So yes, hurry up. Can anyone do the calculation for me? I'm not having a Sir, answer calculator. is D. Answer is D or B. Yes, 9.6 into 10 power 3. Okay, good. So multiplying whole of this, we are going to get as 9.6 into 10 power 3 joules. So you may see the calculations. I have not calculated it, but this is the way out of solving the expression for the work done. Is this understandable? Sir, जी जी I have a question. जी In like you stated F is equals to W into sine 40, but yes back down here you stated W is equals to 2.5 into 10 raised to power 3 into sine 40 into D, like हाँ the D value of 6. हम्म तो इस पे एग्जामिनर like most probably नहीं मार्क बेटा नहीं काटेगा because आपने मैं यहाँ पे आपकी W. कंफ्यूजन समझ गया हूँ. देखिए दो चीजें हैं. Here we are discussing work done on an inclined surface. तो हमें Okay. मेन कॉन्सेप्ट आपके पास क्या होना चाहिए? वी नीड ओनली दैट फोर्स जिसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए एज अ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. We only need that Okay. force. So on the cases of in the case of inclined surface, we always break down this specific force. यानी कि जो weight लग रही है, अगर आपको याद हो inclined surface की जो हमने बातें पढ़ी थी, तो वो जो force जो भी यानी कि इस direction में लग रही होगी या इस direction में लग रही होगी, whatever force is the force which is applied parallel to the horizontal to the inclined surface will always be W sine of 40. और कोई भी ऐसी Yes, फोर्स sir. जो परपेंडिकुलर लग रही होगी किसी भी inclined surface को, बेशक वो इस तरह perpendicular हो या downward perpendicular हो, that force will be given by W cos of 40. So do remember, in case of when we are finding the work done in case of inclined surfaces, we will be using the sine 40 or sine theta angle or sine theta component. This is only for the inclined surface part. Okay, Whereas sir. Thank you. अगर नॉर्मल सीधा स्ट्रेट सरफेस की बात करूं तो उस पे जो भी फोर्स लग रही है, लेट्स से देयर इज वन फोर्स व्हिच इज एक्टिंग दिस वे at an angle theta and it is covering some distance t. So in this specific case, what is the component of the force in the direction of distance? It will be F cos of theta into d. So this will be becoming as Yes, sir. Ft cos of theta. राइट. सो प्लेन सरफेस का अलग सिनेरियो है, इंक्लाइंड सरफेस का सेपरेट सिनेरियो. इज दिस ठीक है अंडरस्टैंडेबल? सर. Now I get it. Yes, sir. ओके गुड. एनी अदर Thank क्वेश्चन you टू very एनी much, sir. अदर किड्स? जी, shall I move onwards? Hurry up, please speak up. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So these are few more questions related to the another few examples related to the work done. तो quickly इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ हो रहा है. There is a block of wood of mass 300 kg. So this block is having a mass of 300 kg and it is moved along a inclined rough surface from point X to point Y. So point X से ये move करें towards point Y, which are 50 meter apart. तो उसने हमें distance भी बता दिया 50 meter है. The vertical height between X and Y is 10 meters. तो ये जो vertical आपके पास height आ रही है, that height is 10 meter as shown in the diagram. Therefore driving force of 1600 Newton and a constant frictional force of 1000 Newton which is resisting the motion. तो एक forward force है 1600 और एक frictional force है 1000 Newton. तो आपको एग्जामिनर कभी ये भी कह सकता है कि find the work done due to the driving force. तो how we are going to find out the work done due to the driving force? तो सिर्फ हम इसमें driving force को जो है यूज करेंगे. So this driving force will be equals to what? It is 1600. We know the formula for this is FD cos of theta. तो हमें ये horizontal force पहले से ही पता है और वो कितनी हो जाएगी 1600. D is going to be the distance of 50 meters into cos of 0, क्योंकि ये force और distance दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल हमारे पास क्या होगा? 0 होगा. And our work done will be equals to what value? 80,000 joules. But if it is asking to find out the work done by the frictional force,
So the work done by the frictional force will be given by what formula? W is equals to Ft cos of theta. So force is going to friction force. We know friction force is what? Friction force is the backward force, and that backward force is 1000. And again, the distance covered during the friction being exerted is 50, and angle between 50 and 1000 will be 180 degree, because we know distance ऊपर की तरफ है, frictional force backward की तरफ है, तो इनके दरमियान जो एंगल डेवलप हो रहा है वो कितना है? 180 degree का. So in that specific case, when we are going to use F into D into cos of 180 degree, this will be giving us an answer of negative 50,000 joules. And let's say if it is being asked to find out the work done by the gravitational force, तो यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह एक्ट कर रही होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वेट. तो अगर बॉडी यहाँ पर पहुंची है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, तो हम इस केस में कौन सा डिस्टेंस लेंगे? द डिस्टेंस विल बी, हम वेट की डायरेक्शन में वो डिस्टेंस लेंगे, लेकिन के वेट जो है वो वर्टिकल है, तो डिस्टेंस भी हम वर्टिकल वाला लेंगे. तो हाउ विल दिस बी डन? दिस कैन बी डन एज weight of the object, like work done इस केस में आ जाएगा mg, weight of the object, and the downward height h. So in this specific case, weight mass था 300, the value of g was 9.81, and the height was 10. So we are going to solve it out, and roughly we will be getting around 30 kilojoules. So this is how it will be done in this specific case. Is this fine? जी सर. नहीं, this question is not related to plane surface, this is related to inclined surface, but already उससे हमें forces parallel to the distance निकाल के बता दी हुई हैं. तो जब भी हमें forces parallel to the distances पता है, तो हम directly work का formula लगाएंगे F into D cos of theta. बेटा cos इस वजह से यूज किया हमने क्योंकि अब हमने सिर्फ डायरेक्ट देखिए दो चीजें हैं. एक चीज ये है कि आप जब पहले फोर्स निकाल रहे हो, जब फोर्स निकाल रहे हो तो उसमें उसमें इंक्लाइंड सरफेस में आपने फोर्स लेनी होती है साइन थीटा वाली, फोर्स निकालने के लिए. और जब आप वर्क निकाल रहे हो तो वर्क में आप हमेशा कॉस थीटा यूज करते हो. ये दो डिफरेंसेस हैं. अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें फोर्स दी गई है, पिछले क्वेश्चन में हमें फोर्स नहीं दी हुई थी. तो इफ फोर्स इज गिवन टू अस, वी विल बी यूजिंग द साइन वन, और फिर उससे हम वर्क को फाइंड आउट करेंगे. तो बेटा फर्स्ट वन में एफ डी ही यूज किया ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस ही हमने यूज किया. फोर्स आपकी फॉरवर्ड जा रही है 1600, डिस्टेंस है 50, तो 1600 इंटू 50 दोनों का एंगल सेम है, तो कॉस 0 डिग्री ले लिया. तो बेशक आप कॉस 0 ना भी लिखो तो वो बनता है एफ डी के इक्वल ही है. सो दिस विल बी इक्वल टू 80 किलो जॉल्स. आगे चलूं? जी सर. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एनर्जीज. तो हमारा वर्क डन यहाँ पे खत्म हो गया है. वर्क डन में बेसिकली बस इतनी ही बातें थी. तो हम ये क्विकली टाइप्स ऑफ एनर्जीज को आपसे एज ए पूछेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी हम एक रिकॉल कर लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज वी आर हैविंग, और इसको बस क्विकली गो थ्रू करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एनर्जी की टर्म है क्या. हाउ टू डिफाइन एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? सो एनर्जी को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, एबिलिटी of a body to do work. Ability of a body to do work is known as energies. और जो energies हैं, they are present in multiple forms, different forms to us. So energy can be kinetic energy,
It can be gravitational potential energy, elastic potential energy, electrical energy, chemical, nuclear, radiant, internal energies, and so on and so forth. So kinetic energy, all you know is kinetic energy is the energy which is possessed by an object due to its motion. तो जो भी बॉडी के पास एनर्जी मोशन की वजह से होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज kinetic energy. How to define it? The gravitational potential energy. Gravitational potential energy is the energy possessed by an object due to its position in gravitational field. फॉर एग्जाम्पल इसकी देख लें कि जो वाटर फॉल कर रहा होता है फ्रॉम रेज्ड ऑब्जेक्ट, या जो वाटर प्रेजेंट होता है इन अ डैम, तो वाटर बीइंग प्रेजेंट इन अ डैम या एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, उसमें कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है. ऑलरेडी हम डिफॉर्मेशन का चैप्टर पढ़ चुके हुए हैं, तो उसमें हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लोर किया है. और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड. तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेच होता है या कंप्रेस किया जाता है, जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. Next is the electrical energy. It is the energy which is stored on the electric charges. Chemical energy, it is the energy which is present between the bonds of the atoms of molecules. और chemical energy कहाँ कहाँ exist करती है? Chemical energy is present in food. It is present in fuel like petrol, natural gas, coal. बैटरीज के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है, दैट इज केमिकल एनर्जी, और बैटरीज केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देन वी आर हैविंग अ न्यूक्लियर एनर्जी. व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? इट इज द एनर्जी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. और जब भी न्यूक्लियस ब्रेक होता है या मेक होता है, तो दिस एनर्जी इज जनरली बीइंग प्रोड्यूस्ड और फॉर्म. The nuclear energy is the energy inside the nucleus of an atom. और एटॉमिक बॉम्ब्स और रिएक्टर्स के अंदर ये एनर्जी को यूज किया जाता है. रेडिएंट एनर्जी क्या है? एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस like UV rays, infrared rays, visible light. They all are carrying energy with them, and such type of energies are called as radiant energy. Last but not the least is the internal energy. What is internal energy? It is the type of energy जो कि कोई भी जो बॉडी, अगर मैं बात करूं, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ अ मैटर, इट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, वो किसी ना किसी एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं. और वो जो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, और आपको पता है बॉडी के अंदर, मैटर के अंदर कॉन्टिन्यूसली जो एटम्स होते हैं, दे आर वाइब्रेटिंग, या मॉलिक्यूल्स आर कॉन्टिन्यूसली इन वाइब्रेशन और इन मोशन. तो जब कोई बॉडी मूव कर रही है या इवन वाइब्रेट भी कर रही है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पोजेस होती है. एंड कुछ एटम जो एक सर्टेन पोजीशन पे होते हैं एक दूसरे से, तो जो एनर्जी उनके दरमियान प्रेजेंट होती है, दैट इज ड्यू टू देयर पोजीशन, वो पोटेंशियल एनर्जी है. सो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी. यस गाइस, दिस इज फाइन. जी सर. फिर और भी एनर्जीज होती हैं लाइक साउंड एनर्जी. जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करे तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज साउंड. फिर वी कैन हैव हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी, with energy which is being like moving from a hotter place to a colder place. तो बेसिक टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं. इनके इनकी बस इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ये क्या क्या है. इनको एज अ डेफिनेशन बस कुछ की आपको आनी चाहिए. रेस्ट डेफिनेशन इज नॉट बीइंग आस्क्ड मच. Shall I move on? Yes, sir. Okay, the very important one, और इसको भी हम डिस्क्लोज करते हैं कि एनर्जी है क्या. ऑलरेडी आपको पता है कि ये है क्या, और इसका फॉर्मूला क्या है, और सारी चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी जो अभी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज बाय द वे काइनेटिक एनर्जी? इट इज द एनर्जी विच इज पोजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी. So how you can define it? Energy possessed by a body due to its motion.
So energy which is possessed by a body due to its motion is known as kinetic energy. ठीक है? The energy which is possessed by a body due to its motion is known as kinetic energy. And what is its formula? Its formula is written on the box. Kinetic energy is equals to half mv square. And you people are pretty aware about it. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि if mass is constant, अगर mass same है and v यानी कि speed doubles, ठीक है? Mass is constant, mass change नहीं हो रहा and speed doubles. So what is going to have an impact on the kinetic energy? So we know हमारी जो नई kinetic energy है वो क्या बन जाएगी? It will be equals to half m double of v of previous one. So you can see from here that it will be equals to double का मतलब क्या हो जाएगा? It will becomes 4 times of half mv square. And this kinetic energy, the new kinetic energy will be equals to 4 times of the initial kinetic energy. तो आप ये क्या बोलोगे इसके बारे में कि काइनेटिक एनर्जी increases by 4 times. काइनेटिक एनर्जी कितनी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी? 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी. तो हम रिलेशन देख सकते हैं यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to the square of velocity. Kinetic energy is directly proportional to the square of velocity. Kinetic energy is proportional to the square of velocity. और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ बनाने को आ जाए, जो एग्जामिनर एट टाइम्स पूछता है कि वेलोसिटी इज ऑन एक्स एक्सिस एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑन एक्स एक्सिस, so how are we going to draw its graph? Its graph will always be drawn in this way. एक इंक्रीजिंग कर्व की फॉर्म में इसका ग्राफ यूं बनेगा. ठीक है? क्योंकि स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो एक इंक्रीजिंग कर्व की फॉर्म में होता है, पैराबोलिक शेप में होता है. दिस इज फाइन. आगे चलूं. Yes, sir. एंड लाइकवाइज अगर वेलोसिटी हाफ हो जाए. Sir, जी जी. could you go over the formula part again? Which formula part? Like, The one on the mass is constant part. yeah. So if for any object the mass is constant, mass is not changing, and let's say the velocity becomes doubles, right? So how we can express the kinetic energy? The basic formula for the kinetic energy is what? Half mv square. And if I say the velocity doubles, so instead of v, can I write that v becomes twice of v? Yes, I can. The velocity is becoming, the new velocity is becoming the twice of the previous one. So when it becomes twice of the previous one, so 2 square will be becoming 4, 4 will be coming out, and this will be equivalent to what? 1 over 2 mv square. And we know half mv square is again equals to what? It is the initial kinetic energy. So change in kinetic, the new kinetic energy will becomes what? 4 times of the original kinetic energy. It will becomes 4 times of the initial kinetic energy. So you can say if the velocity doubles, the kinetic energy increases by 4 times. Is this fine? Yeah, thank you. Okay, welcome. Okay, moving onwards to the next part. Okay, we are having. जी मैं ग्राफ दोबारा समझा देता हूँ रोजालिया. अगर आपको कहा कहा जाए कि आपने रिलेशन फाइंड करें या रिलेशन बनाएं बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी अगर मास कांस्टेंट है, मैथमेटिकली चीज़ों को एक्सप्रेस करना थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए. दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर.
और इस रिलेशन से अगर मैं देखूं कि मास अगर मेरा कांस्टेंट है और इक्वल्स का साइन है, तो आई कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. Can we say this? Kinetic energy is stated as proportional to the square of the velocity. Okay, from this we can say that if velocity becomes 2 times, kinetic energy becomes 4 times. If velocity becomes 3 times, kinetic energy becomes 9 times. If velocity increases by 4 times, kinetic energy increases by 16 times. If velocity becomes 5 times, kinetic energy becomes 25 times. तो अगर इस सारी चीज का हम एक ग्राफ बनाएं तो वो एक पैराबोलिक ग्राफ बनता है. You would have studied in maths, and this is an increasing curve like this, right? So kinetic energy is always being drawn in the form of an increasing curve in this way. So kinetic energy is on y-axis and speed on x-axis. Is this fine? Shall I move on? Yes, sir. Okay. Now put a mark very important with this derivation. This is pretty very important. Last year भी मैंने ये करवाई थी derivation, and this came in the examination for 3 marks. 3 marks का सवाल था in your previous 2025 May June paper. तो इसको बड़े गौर से देखिएगा कि इसमें हो क्या रहा है. कि क्वेश्चन ये कहता है कि लेट्स से इनिशियली द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is at rest. Initially an object is at rest, so we can say that the initial speed of the object is what? The initial speed of the object is 0 meter per second. So let's say कि एक force act करती है. There is one force which is acting on the mass, and this force is like making an object to cover a distance of s. It makes an object to move a distance s, and let's say it reaches to a new velocity. Let's say that velocity is the final velocity v, right? So initially this velocity is 0. तो हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन है जो कि आपने याद रखना हमेशा जब भी किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन किया जाता है. इट एंड इफ इट मूव्स, that work done by the force in this specific case, we can say it will be equals to change in kinetic energy of the body. This relation is pretty very important. Work done on an object by a force F, this will be equals to change in kinetic energy of the body. So we know what is the relation of finding out the work done. So work done is given by an expression force into displacement S, right? And if we say that this work done is equals to kinetic energy stored in a body, so we can say this is equals to ek. So F into S will be equals to kinetic energy. Now from Newton's second law of motion, we know that resultant force is equals to ma. Resultant force is equals to what? Mass into acceleration. So I'm going to replace that mass into acceleration instead of F. So what relation I'm going to get? This will be equals to MAS is equals to kinetic energy. हमें kinetic energy का फॉर्मूला निकालना है. अब मुझे पता है कि from equation of motion, what is the equation of motion? I know 2as is equals to v square minus of u square. From equation of motion what I know, 2as is equals to v square minus u square. और अगर मैंने as को subject बनाना है, what I will be doing, as is equals to 1 by 2 into v square minus of u square. तो ये मेरे पास एक रिलेशन बन गया for as. So now I will replace this as in this relation. Instead of this as, what I will write?
I will write mass instead of as, it will becomes what? 1 by 2 v square minus u square, and this will be equals to kinetic energy. Now further I am going to see from this that kinetic energy will be equals to 1 by 2, मैं इस पूरे ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूँ, 1 by 2 mass into velocity square minus initial velocity square. So I know I started from a point that initial velocity is 0. So if initial velocity is 0, so I'll be marking this u as 0. So what we are left with for the relation of kinetic energy? Kinetic energy is equals to half mv square. So this is the relation we are going to, this is how we are going to say or derive the equation for kinetic energy. This formula is pretty important. Its derivation do appear in your exam. So guys, do keep it in your mind. मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको, सिर्फ चंद स्टेप्स याद रखने हैं। कहाँ से ये assumption स्टार्ट होगी? हम कहेंगे लेट्स से an object, initially an object is at rest, it is experienced by a net force and it begins to move and it covers some distance s and its velocity becomes v, right? तो हुआ क्या इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर? इनिशियल वेलोसिटी व्हेन इट वाज रेस्ट इनिशियली इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0. So we know, we are going to say when force is going to be exerted and it is going to cover some distance in the direction of force, तो क्या इस पे होगा? Work will be done. There is going to be a work done going to happen. So work done will be equals to force into displacement. एंड वी ऑल्सो नो जब किसी भी बॉडी पे वर्क डन हो रहा होता है और अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है, अगर वो मूव करना शुरू कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी पोजेस्ड है? काइनेटिक एनर्जी. So work done by the net force will be equals to change in kinetic energy. And we know how we can find out the work done. It is equals to net force multiplied with displacement is equals to kinetic energy. And from Newton's second law of motion, we know what force is equals to. F is equals to ma. So this will becomes mass is equals to kinetic energy. अब मुझे एक चीज और पता है कि from equations of motion 2as is equals to v square minus of u square, and as can be found as 2 को मैं